हेलो एवरीवन। फाइनली नया इनकम टैक्स बिल आ गया है and it has been tabled in the parliament very recently. In this video, we will decode eight top things about the new bill, which is called the Income Tax New Bill 2025. पहला है simplification and modernization. So जो नया एक्ट जो नया बिल है that aims to reduce the number of laws or number of sections from 819 to 536, cutting word count by at least 40 to 50% for better clarity. सेकेंड जो बात है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर विच इज रिप्लेसिंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. सो अब जो है ना वो टैक्स ईयर खाली हम बोलेंगे विच इज April 1 to 31 March इंस्टेड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. अगेन उससे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी और सिंप्लीफिकेशन आएगा. The aim is to simplify the language. Complex legal terms have been replaced with clear wordings. Number one ये है. Second है residency rule. So Indian citizens earning more than 15 lakh, which is excluding foreign income and which is not taxed anywhere else, are deemed resident. अगर आप 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम है और आपका टैक्स कहीं भी टैक्स नहीं हो रहा है आपका इनकम, तो यू विल बी अ डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया. RNOR का स्टेटस भी क्लैरिटी आ गई है. इंडिविजुअल स्टेइंग फॉर मोर देन 120 days up to 182 days in India will with income above 15 lakhs will qualify for RNOR. Third point, which is very important, expanding the scope of the income. So digital economy पे focus है. Taxation now includes digital earning and virtual digital assets, which is massive. Number 4 point जो है वो है deductions and exemptions. So the tax bill aims to simplify tax benefits, new incentives for startups, digital businesses and renewable energies. हमने बजट में देख ही लिया था कि हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया है विच विल फर्दर गिव मोर रिलीफ टू सैलरीड इंडिविजुअल. पॉइंट नंबर 4 इज updated holding period. So digital assets has been classified under short term and long term gains, right? और वो अपडेटेड होल्डिंग पीरियड के अंदर है. मॉडर्न वैल्यूएशन मेथड्स आए, क्लियर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन एंड री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स. इस पे बहुत फोकस है. पॉइंट नंबर 6, डिजिटल पेमेंट रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है in a very very clear manner, wherein business expenses deductions are now explicitly include digital transactions. So government understands that economy is being run more by digital economy and digital transactions होंगे तो उस पे फोकस है, क्लैरिटी है, सिंप्लीफिकेशन है. प्रॉपर्टी इनकम रूल्स में भी क्लैरिटी है. देयर आर क्लियर टैक्स ट्रीटमेंट फॉर वैकेंट प्रॉपर्टीज एंड स्टॉक एंड ट्रेड प्रॉपर्टीज. पॉइंट नंबर 7, which is compliance and administration, faceless assessments. So the government says that AI driven faceless assessments hoga for more transparency. We will see what does that actually means. Second जो चीज है वो थोड़ा concerning है from a privacy law, which is digital access for tax authorities. So अगर income tax raids होती है, search and seizure होता है, तो e-record for scrutiny including emails and social media has to be given to tax authorities and they will have access. ये थोड़ा सा concerning है but ये भी है. And 8th point, which is the last point, is anti-avoidance and dispute resolution. So stronger GAR laws हैं which will further tighten the rules against impermissible tax avoidance agreement. And GAR basically journal avoidance agreement होता है जिससे आप कोई ऐसा एग्रीमेंट क्रिएट करते हो टैक्स बचाने के लिए, उस पर इम्पैक्ट है. एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी will be created for faster settlement for small and medium size taxpayers. That is very very important. So overall अगर आप देखो तो the new income tax bill 2025 aims to modernize tax laws, embrace digitalization while ensuring fair tax administration and simpler compliances. ये ऑब्जेक्टिव है. अभी नया नया आया है. We will further study in detail, and when this is finally notified we will come up with more write-ups, videos and webinars. I hope you have liked this video. Thanks for today.